हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असलम हुसैन और आज के इस वीडियो में मैंने एक सिल्क थ्रेड फ्लावर बनाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये फ्लावर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम इस पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 सिल्क थ्रेड रील लिए हैं और इसके लिए मैं 2 तार की नीडल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस फ्लावर की आउटलाइन कर लेंगे इस तरह। फिर इस तरह हमको फ्लावर के अंदर की स्टिच करना है।
फिर हमको नॉर्मल थ्रेड लेना है, दरदोजी लेना है और दरदोजी वाली नीडल लेना है और फिर दरदोजी को छोटे छोटे पीसेस में काट लें। जैसा हमारे फ्लावर का साइज रहे हमको उसी साइज की दरदोजी भी काटनी है, ये ध्यान रखना। फिर जरदोजी भी इस तरह से सिलाई कर दें। फिर इस साइज के बीड्स लें, उनसे फ्लावर के बीच में एक गिट्टी बना दें। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।